Good morning and welcome back, friends, to the another episode of the Midas series. Enhance your financial literacy and mindset with the Midas series, Wealth Fundamentals to Wealth Mastery, which is a complementing series to my earlier two series. That is the Money Mindset Mastery with Vikas Joshi and Golden Whispers with Vikas Joshi Inspires Aspirations. Friends, this series has been started simultaneously with the other two series because in the first two series we started with the change of mindset from restricted mindset to growth mindset. Now, as we proceeded further addressing much of the limiting beliefs, it was a necessity that we should understand the finance, how to grow, what are the basic requirements that you should know or anyone should be aware of, what knowledge he should or he she or should have in respect of finance, how to proceed further. We are starting from the basics of finance, so that as we proceed further into the details of financial stability, the base is very firmly set. That is the motive of this series. The initial stages, we are taking time to set the base. What are the financial terms? What mindset you require to be set with, so that as we proceed further, the mindset is in line with the process we are following. So today's term is, friends, इमरजेंसी फंड. आमतौर पे जब भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ तो अपने पास फिक्स डिपॉजिट रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए. आमतौर पे यूज करते हैं ना. These terms are usually used in homes. कि अगर कोई बीमारी आ जाए तो हमारे पास पैसा चाहिए, किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़ जाए. यस फ्रेंड्स, दैट सेंटेंस, किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़ जाए, it is the base for formation of the emergency fund. Emergency fund, as the word itself says, that the funds which are required are set aside to face the unforeseen circumstances. Life plays many games. It poses many challenges. And we have to navigate our life through these challenges successfully. And one of the part to be successful in life is finance. So finance, the emergency fund, is a part of that finance which is required in case of emergency, in case of unforeseen circumstances, in case of challenges the life may pose, so that we navigate our life successfully. जैसे कि अभी बीमारी पर आ गई, घर में शादी आ गई, कोई त्योहार आ गया, घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, खर्चा तो होता ही है. You see, even a single person addition to the family increases the expenses. That is the truth of life. So we have to be prepared for the things, and one of the steps to be prepared for these unforeseen circumstances is to be prepared with the emergency fund, so that our investments, our thought processes towards our financial stability do not get a speed breaker, or do not get stumbled on, or do not get stopped just because we had to change the ways or adjust the finance which was to be invested towards the expenses of unforeseen circumstances. Hence the emergency fund. The emergency fund is the most important required part of life. As in my earlier video I stated that if your income is 10,000, straightway 10%, that is 1,000 rupees, you should be keeping it aside for your expenses, for your investments. Of that, some part has to be shifted to the emergency fund. Small amount, agreed, but on monthly basis, then it grows. You may apply a simple method of recurring deposits in a bank. Since I am a banker, I will always suggest that, because recurring deposits gives you more amount. It is interest on interest, compounding interest factor. So as you increase that,
the amount of emergency funds grows. Whatever the case may be, the principle is not touched. You may, if you require, the question may be कि अरे अभी लगेगा तो मुझे वो एफडी तोड़नी पड़ेगी. हाँ तोड़नी पड़ेगी बिल्कुल. तो इंटरेस्ट कम मिलेगा. हाँ मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा. प्रिंसिपल तो नहीं जाएगा ना उसमें. जो बचाए थे हमने, हमारा पर्पस इंटरेस्ट अर्न करना नहीं था उसमें. बट आइडल मनी आई विल नेवर सजेस्ट टू कीप इट आइडल. मनी शुड जनरेट मनी. सो इंटरेस्ट अर्न करना चाहिए. इसीलिए रिकरिंग डिपॉजिट छोटी अमाउंट, सालों भर. आपको लगा 8 महीने में आपको पैसा वापस चाहिए, ठीक है तोड़ दीजिए. जो भी मिलेगा आपको पैसा, जो प्रिंसिपल जमा है वो तो मिलना ही है, प्लस सम इंटरेस्ट तो मिलेगा ही. एज पर बैंकिंग, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग. नाउ व्हाई दिस इमरजेंसी फंड? एक है ना अपना, अगर इमरजेंसी फंड है तो मन में तसल्ली है. वी हैव पीस ऑफ माइंड दैट सम सिक्योरिटी इज अवेलेबल with you for financial cushion or unexpected expenses or unforeseen circumstances. नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो डिसिप्लिन नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो है आया, whatever income you may be receiving, you are ready to spend it. So there would not be any part of saving, or you are not prepared for your future. Yeah, we are moving towards financial stability. It is being preparing ourselves to a good future. So this fund offers a financial protection. अब फाइनेंशियल कुशन है तो प्रोटेक्शन है. वी आर प्रिपेयर्ड कि ठीक है अनफोर्चुनेट सर, आप वी कैन नॉट स्टेट दैट हम अनफोर्चुनेट क्या आएंगे, कितना खर्चा आएगा. नो नो नो, वी कैन नॉट स्टेट दैट. बट फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रकम अगर आप इमरजेंसी फंड में डालते रहोगे, तो अगर अनफोर्चुनेट नो वन विशेस टू फेस एनी इश्यूज, तो सही है ना. कोई ये चाहेगा नहीं कि प्रॉब्लम आ जाए मेरे ऊपर. वैसे ही अब इमरजेंसी फंड तैयार करना शुरू करना चाहिए. Right from the day one you start working or start generating income for yourself. If at all you are not generating income, you must percolate this idea to your family members, your earning members, that some fund is to be kept aside for emergency of the family. अकेले नहीं हो ना भैया, माँ बाप है, भाई बहन है, बेटा बेटी है, सब लोग तो है. A good family should maintain healthy financial status, but that cannot happen in a day or in एक रात्र में नहीं होने वाला है. आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. सो धीरे धीरे छोटी छोटी रकम फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड के लिए डालते जाइए. दैट विल हेल्प यू. नाउ दिस फंड नहीं हुआ तो उसका क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अरे प्रॉब्लम क्या, फंड ही नहीं है तो तुमको कहीं और से उसकी प्रॉब्लम के लिए तुमको किसी के पास जाना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. सो इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो आइडल फंड हो गए. वही तो मैंने कहा, डोंट कीप देम आइडल, कीप देम इन द बैंक where you are earning interest on interest. I will not suggest invest in other products because that is emergency fund. Bank products which are callable at your will are required so that you earn some interest on it. I would suggest you invest in a bank for a compounding interest only. लेकिन ये रखना आपको बैंक में ही है, घर में मत रखो. घर में सम अमाउंट रहनी चाहिए, बट अमाउंट इन होम इज आइडल फंड. आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स. एवरी पेमेंट इज मेड ऑन गूगल पे. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो रही है, सब कुछ है ना. सो डोंट वरी. When you're carrying mobile or mobile banking is at your fingertips, you are carrying your account with you. So earn some interest on it. Now this fund, if not created, then you will have to beg, borrow. I will not say steal, but that will be compromising your self-respect and creating some depth for you. है ना. इमोशनल डेप्थ तो बड़ा ही बढ़ता ही जाएगा. किसी ने आपको हेल्प कर दी तो इमोशनल डेप्थ हो ही गया.
अब जिंदगी भर आप सबको बताते फिरोगे, अरे इसने मुझे हेल्प किया, अगर नहीं तुम नहीं बताओगे तो वो बताते फिरेगा, जब ये प्रॉब्लम में था तो मैंने उसको हेल्प की थी। होता है ना। नाउ दिस इमोशनल डेप्थ you have to avoid, hence the creation of emergency fund, hence the financial stability requires the fund to be deposited in the bank, which should not be touched unless and until it is required in case of emergency only. Now since this fund has been prepared and has been kept in the bank, it is an easy cash. बैंक 6 बजे बंद होते हैं, 4 बजे बंद होते हैं, वॉट एवर द क्लोजिंग टाइम ऑफ द बैंक मे बी, बट ATMs आर अवेलेबल, ऑनलाइन पेमेंट्स आर अवेलेबल 24 hours. So we should not be worrying about that part. So with this, we have the quick access to our funds whenever we require. A stable family requires a financial stability also. Then only it continues to stay on. Now it prevents the financial setbacks also. Setback money, whenever you are in problem, you have to call for money from somebody, beg, borrow, owe. So it is very difficult to compromise on your self-respect whenever you are in a position to generate income. Now you feel very bad to borrow from someone. It is not a good idea, friends. So you have to keep aside some funds as emergency funds, which is readily accessible, easily convertible to cash, that can help you to tide on your unforeseen circumstances. Now this will help you in a way for financial discipline. We started with the term financial discipline. Without financial discipline, we cannot be successful. So this term will help you to be financially disciplined. Automatically, a part of your fund will be saved, whether you use it for emergency fund or not. But I would suggest, once you have tagged that particular fund as emergency fund, do not use it for any other requirements. Just consider that the amount is not readily available for you right now. जैसे होता है कभी कभी लगता है, अरे मुझे गाड़ी लेनी है, स्कूटर लेनी है, टीवी लेना है, अरे है ना अपने पास इमरजेंसी फंड, अरे नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी इसके लिए नहीं है. So don't mix up your wants with this emergency fund. That emergency fund should be kept for only unforeseen circumstances only. This is a preparation of your future. If you want your future to be stable, financially sound, you have to be prepared with the funds. Friends, finance becomes the base of life. मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. So don't compromise on that. Be very strict and disciplined. Once you have formed an emergency fund, please do not use that fund to anything of your likes or wants. Let it be treated as an emergency fund only. Now this will encourage you. अभी तो शॉर्ट टर्म के लिए किया था, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है. तो दिस विल एनकरेज यू फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया. जैसे अभी हमने मान लो कि 1 साल के लिए हमने रिकरिंग डिपॉजिट निकाला था, अब जब वो फंड लगा ही नहीं तो अब हमने उसको डबल इन्वेस्ट कर दिया. नाउ द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्टेड गिविंग यू द रिजल्ट्स. पैसे से पैसा बनना चालू हो चुका है. Now you are prepared with the things. So your financial planning for long term will also help you. You will be avoiding the borrowing part. You will be avoiding the credit card part. इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना. लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो दैट इज अ डबल लॉस. इमरजेंसी तो फंड आया ही गए, फंड जो आएगा वो इमरजेंसी के लिए खर्चा होगा, उसके ऊपर मुझे ब्याज भी देना है. सीरियस मैटर. नाउ दिस इनेबल्स टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. जैसे अभी मैंने कहा कि अगर रिकरिंग डिपॉजिट मैंने 1 साल के लिए किया, अब वो फंड तो लगा नहीं साल भर में, कोई इमरजेंसी ऐसी आई नहीं. ओके, दैट्स वेरी नाइस ऑफ द लाइफ.
or God that the emergency was not created. But the fund has been created. You have earned interest on that. After a year, on the maturity of your recurring deposit, you can reinvest it in a fixed deposit. Again, that should not be touched. Now that is available. Option is available to you. As I said, any banking option is available for premature closure. That is callable deposits. You should invest in such deposits only which are callable, which whenever you require, the amount should be available to you. Yes, bank provide that. Now this also helps you to fulfill the dreams of your children or your family members or yourself also. जैसा ना एक ड्रीम था कि बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए डालना है, एक्सपेंसेस है, कोचिंग क्लासेस में डालना है, एक्सपेंसेस है. Now that is also an emergency fund because आजकल कोचिंग क्लासेस और इसके फीस बहुत बड़े हैं. So you have to prepare yourself. है ना, जैसे जिम जाना है तो जिम ट्रेनर का फी होता है. That is also a heavy fee. But you should be prepared for these things. How are you going to prepare? By setting aside a small amount on monthly basis for your next year. पहले इसमें तकलीफ होगी, मैं हमेशा कहता हूँ जब शुरुआत करोगे तो तकलीफ होने वाली है, बिकॉज आदत नहीं थी ना, फिनेंशियल डिसिप्लिन थी नहीं. अब जब डालने लगोगे फिनेंशियल डिसिप्लिन खुद को, डिसिप्लिन इटसेल्फ इज ट्रबलिंग वर्ड. खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जब आदत डालोगे देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल. आदत डालते वक्त थोड़ी तकलीफ शुरू में होगी, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाएगी and you will be on the runway of success. So this will help you to provide a cushion for any disastrous moments in your life. Disastrous moment, कोई परिचित गुजर गया, it is also calling for some expenses. That is disastrous. The person who was generating income for you is no more. That is lifestyle. लाइफ इस ऐसे ही चलता है, जो आए उसको जाना तो होगा ही, लेकिन जिस दिन वो जाता है बहुत दुख भरी घटना होती है. लेकिन फाइनेंस रुकता नहीं है ना, हर चीज के लिए फाइनेंस लगता है. सो दैट इज व्हाट आई कॉल डिजास्टर्स मोमेंट. ये मैंने एकदम अल्टीमेट केस बता दी, बट एनी केस जहां एकदम डिजास्टर्स मोमेंट आ गया, जैसे हार्ट अटैक आ गया किसी अपने अपने ही फैमिली मेंबर को, डिजास्टर्स मोमेंट विच रिक्वायर्स फंड. डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन डॉक्टर को पैसा लगता है. सही है ना, because nothing comes free in life. So you have to be prepared. क्योंकि डॉक्टर भी अगर जैसे डॉक्टर के लिए तो एकदम फिट बैठता है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. If the doctor has friendship with the patient and is not taking any fees for his services offered by him, then he himself will be in trouble. The fees are heavy. So you should be prepared to face these type of ailments, to face these type of unforeseen circumstances. Now, in other way, this will also make you financially independent. You are prepared with the finance, you are prepared with the things, and it will help you to be independent on financial front also. So you don't have to compromise on your self-respect or on your esteem. Now this in turn will teach you to be responsible person. You will be a person who is owning the responsibility of the family members and yourself. So in a way, you will be judged as a capable person to take along the family or together the family further towards a better future. Isn't it? So friends, please be prepared and keep yourself prepared. Be healthy, wealthy, and wise. And one of the steps is creation of emergency fund. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Midas Touch, Wealth Fundamentals to Wealth
Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day. Enjoy the life, friends. It is a one time activity. Do enjoy.